ओके जी, आज हम पढ़ रहे हैं Augustine of Hippo, also known as Saint Augustine, who was born in 354 AD and passed away in 430 AD. You cannot overestimate the importance of Saint Augustine to the intellectual development of the Christian world. Huge footprint hai. Augustine was born a Roman citizen in Tagaste, which is in North Africa, in 354. He was the bishop of Hippo. He was an African and considered a provincial. That means that he was not in the center of Rome, but in a province. He is one of the most important church fathers of the Latin church. By Latin here, we don't mean Latin America, but of the Roman church. And in his time, Christianity was already becoming the official religion of the empire. खास तौर पे जब थियोडोसियस ने पेगन कल्ट्स को 382 में आउटलॉ कर दिया ऑल टुगेदर, तो उसके बाद से फिर Christianity became the official religion of the Roman state. But in 410, King Alaric I managed to conquer Rome. His Visigoth army managed to sack Rome. And this was a big shock to many people कि इन्होंने कैसे रोम को conquer कर लिया. So Saint Augustine was born in a time when the Roman world dominated. He was a Roman citizen. Christianity had been around, as you can see, for at least 300-400 years. It had spread everywhere and it had become the state religion more or less in his own lifetime. It was widespread, but this is also the world in which the Roman Empire is now coming to an end. The Western Roman Empire is now coming to an end. Already 2 centuries before this particular event, that is the sack of Rome by the Visigoths, already nazar aa raha hai ki Western Rome is slowly on the decline. So Saint Augustine is writing in this particular framework where Christianity is spreading widely, but Rome is in a decline. His many important works include the most important one, The City of God, on Christian doctrine and confessions. He died in 430 with Hippo, a besieged city full of refugees from the surrounding country. It was sacked and burned the following year. So उसी से आपको अंदाजा हो रहा है कि he was writing at a time when the Roman Empire was basically collapsing. One of his most famous books is this one, The Confessions of Saint Augustine. And it's all about his childhood. And he writes that his childhood was very difficult. He hated studying the Greek language, और उसको बड़ी मार पड़ती थी. वो फिर भी Greek language उसको पढ़ने का शौक नहीं था, Latin पढ़ने का उसको शौक था. कहता है, I would rather die than live that childhood all over again. Anybody here feel that way? Raise your hands. सर शुक्र है वो पीरियड खत्म हुआ. Well, this was not necessarily altogether unique to Saint Augustine because, he writes कि भाई सारे इस तरह ऐसा, who wants to go back to being a child and getting beaten up all the time? So he's not saying I'm an exception here कि मेरा बड़ा ही कोई peculiarly बुरा childhood था, मगर basically he's saying childhood सबके ही ऐसे होते हैं, कुट्टे पड़ती हैं, मारे पड़ती हैं. So in his childhood he was also a bit naughty. एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ उसने जाके नेबरहुड से जाके कोई पेयर ट्री था, उससे जाके वो पेयर्स जो है चोरी कर लिए, और फिर उसने बाद में सोचा कि ये मैंने क्यों चोरी किए थे, हालांकि मुझे पता था कि बेकार किस्म के पेयर्स हैं, और मगर ऐसी शुगल लगाने के लिए उसने सोचा कि मैं ये पेयर जो है वहाँ से चोरी कर लूँ. कभी आपने कोई ऐसी चीज़ की है कि आपको ज़रूरत भी नहीं थी मगर ऐसी शुगल के लिए आपने सोचा कि कोई ऐसा काम करे? तो सेंट अगस्टीन सेज अबाउट हिमसेल्फ कि मैं भी बचपन में बड़ा शरारती होता था और प्राइड की वजह से और अपने पेयर प्रेशर की वजह से ऐसी ऊट पटांग किस्म की हरकतें करता था जो मुझे नहीं करनी चाहिए. बाय द वे, अगर कभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी जो बॉर्न अगेन मुस्लिम्स होते हैं वो अक्सर ये आपको बताते हैं कि जी मैं बड़ा गलत आदमी होता था, देन आई सॉ द लाइट. So that very much follows the pattern set by Saint Augustine. Magar he at one time also took a mistress and he had a son from that mistress, but he abandoned the child and that woman, etc.
and he said कि नहीं मेरा ऐसे कोई ताल्लुक वगैरह नहीं है, which was not a nice thing to do, but he writes about it himself. That's how we know about it. You know, when he became all respectful, etc., he became a professor of rhetoric in Milan. If he was ever around during the time of Twitter, sorry, I should say X now, so, you know, you could have been assured that the past would have caught up with him and he would have probably been cancelled. But khair, us zamane ke andar shayad maybe not, because attitudes are very different. So what was the intellectual climate in which St. Augustine was writing? As I told you already, एक तो बात ये थी कि रोमन रिपब्लिक जो है वो collapse हो गया था, फिर एम्पायर बन गया था, अब एम्पायर भी collapse हो रहा था. तो वो जो पुरानी डिबेट थी between the Roman Republic and the Roman Empire, वो एक बहुत important backdrop था. सिसरो की जो राइटिंग्स थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी. और दूसरी ऑब्वियसली बात ये थी, जो बड़ी डिबेट हो रही थी और होनी ही थी, वो ये थी कि रोमन एम्पायर भी अब collapse हो रहा है, और जो गॉथ्स हैं, जो बारबेरियंस जिनको कहते थे, रोमन्स उनको बारबेरियंस कहते थे, वो तो इतने स्ट्रांग हो गए, जर्मन बारबेरियंस भी उसमें शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, वो इतने स्ट्रांग हो गए कि वो अब रोम को न सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं मगर मिलिटरीली डिफीट कर रहे हैं, और इवन रोम के अंदर आके उन्होंने डिफीट कर लिया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हो रहा है. फिर ऑब्वियसली देयर इज द इन्फ्लुएंस नो डाउट ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो तो है ही, बट देयर इज आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न मिस्टिसिज्म. Now, mysticism, जिस तरह Sufism है, Sufism is also basically Islamic mysticism. तो mysticism के अपने बड़े दिलचस्प किस्म के ideas हैं, जो कि जिनको explain करना भी कोई इतना आसान नहीं है, मगर वो ये है कि basically the world is a kind of illusion and material world is a kind of illusion. It's it's to consider that the material world is not exactly the way we think it is, and to consider it to be something of a lesser thing than that which is the divine light and knowledge. And then there was of course Greek philosophy, जिसका Roman world पे बहुत massive influence था, not only Cicero और Polybius वगैरह के through, but generally as well, directly as well, का बड़ा huge influence था Greek rationalism का. अब ये जो Greek philosophy और mysticism है, इसका भी एक बड़ा interesting, और Christianity का भी बड़ा interesting किस्म का combination एक बंदे ने ऑलरेडी कर लिया था, जिसका नाम था प्लोटाइनस. और आपको याद होगा कि प्लेटो ने एक ड्यूलिस्ट किस्म की दुनिया इंट्रोड्यूस की, यानी कि दो मुख्तलिफ दुनिया हैं. एक वो जो कि तस्वरात की दुनिया है, आइडियाज की दुनिया है, फॉर्म्स की दुनिया है, और एक वो जो कि मटेरियल वर्ल्ड है. और जो फॉर्म्स की दुनिया है वो बड़ी परफेक्ट है, वो टाइमलेस है, वो चेंजलेस है, वो इटर्नल है. और जो ये वाली दुनिया है, ये फानी है, ये इम्परफेक्ट है, ये इतनी अच्छी नहीं, इतनी खराब सी दुनिया है. और जो फॉर्म्स की दुनिया है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के ऊपर एक जनरल कैटेगरी है, जिसके ऊपर एक और जनरल कैटेगरी, जिसके ऊपर एक और जनरल कैटेगरी है. और अगर हम इस तरह सारी कैटेगरीज को ऐड करते जाएं तो जो सबसे टॉप लेवल की कैटेगरी है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रूथ, या द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन, द सिंगुलैरिटी. और उसमें से ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली उस एक कॉन्सेप्ट के अंदर कोलैप्स किए जा सकते. तो अब इसी आइडिया को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसमें बड़े मजेदार किस्म का ईस्टर्न मिस्टिसिज्म भी बन जाता है. इशराकियत का फलसफा, नॉट टू बी कंफ्यूज विद इश्तराकियत का फलसफा. इशराक मींस द लाइट एमिनेटिंग. तो ये नॉलेज एमिनेट करी जिस तरह लाइट एमिनेट करती है, तो यू कैन इमेजिन दैट गॉड इज बेसिकली लाइट, नूर, that emanates from one point, and the shadows that light creates are the material world, and so on and so forth. So lots of very interesting ideas there. And if you can combine that, of course, with Christianity or with the Abrahamic thought, that one, and from which all light and knowledge basically emanate, is nothing other than God. So ये एक किस्म का synthesis already available था, and Augustine was familiar with it. So overall ये आप गौर करें कि जो रोमन वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज थे, क्रिश्चियनिटी बीइंग वन, द ओल्ड पेगन आइडियाज बीइंग अनदर, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म बीइंग अनदर वन, ग्रीक फिलोसफी बीइंग येट अनदर वन, उनकी जो कंटिन्यूटी आफ्टर द रोमन स्टेट इटसेल्फ कोलैप्सेस, उनका जो तसलसल है वो बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च ने उठाया. एंड चर्च बिकेम इन अ सर्टेन सेंस द इनहेरिटर of all the great ideas of the ancient world in new form, in sort of Christian form naturally, but उसी के अंदर बहुत सारे वो ideas का नया synthesis, नए permutations, नए combinations आपको नजर आने ही थे.
because it became the repository of the knowledge of the ancient world. बाकी institutions तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो collapse हो गए थे, वो टूट गए थे, वो खत्म हो गए थे, and so on. So the church was hegemonic in terms of its learning for Europe. ठीक है? It was the hegemonic ideological institution. Ideas इसके dominate करते थे. More hegemonic than any similar institution in the Islamic world. In the Islamic world, क्योंकि बड़ी early on इस्लाम के अंदर splits भी हो गए, civil wars भी हो गई, और the peculiar way जिस तरह से इस्लाम ने evolve किया, उसमें clergy बनी जरूर, मगर वो कभी इतनी ताकतवर और centralized नहीं बन सकी जिस तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहुत ताकतवर centralized church बनी. उस लेवल की ताकतवर centralized क्लर्जी थी मगर डिसेंट्रलाइज थी और चेंज होती रहती थी एंड सो ऑन. तो ये एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड इदारा बना. एंड अंटिल पिपिन एंड शार्लेमेन एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ द फ्रैंक्स इन द 8th century, द कैथोलिक चर्च वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन whose authority aspired to the geographical reach of the Western Empire, by which we mean the Roman Empire. This is important to understand because it's important to understand also because जो European history है, in this period of history जिसको हम medieval period कहते हैं, उसमें church की almost complete ideological hegemony, and the person whose ideas are the most influential, arguably as a theologian over the development of the church, is this man, Saint Augustine. इतना बड़ा influence है. तो दोनों चीजें आप देखेंगे, चर्च का कितना बड़ा influence है और सेंट ऑगस्टीन का massive influence. So you cannot underestimate how important he is. Now, you might think कि अच्छा सर ये बात तो ठीक है, मगर अब चर्च बाद में इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं रही, वो सेक्युलर हो गई वगैरह वगैरह एंड सो ऑन. यूरोप जो है वो सेक्युलर हो गया, अब तो चर्च ज्यादा लोग नहीं जाते और इतनी अहमियत उसकी नहीं रही जिस तरह मिडिवल पीरियड के अंदर होती थी. ये बात भी दुरुस्त है आपकी, मगर इसके साथ साथ ये बात दुरुस्त है कि आप अंदाजा करें कि 1000 साल चर्च की आइडियोलॉजिकल हेजेमनी रही हो, तो जाहिर बात है उसका यूरोप के कल्चर पर, इंटेलेक्चुअल आइडियाज पर एक बहुत बड़ा असर होना ही था. और जिसने भी उभरना था उसके बाद या उससे पहले या उसने या तो उसकी हमायत में या उसकी मुखालफत में ही उभरना. So the church has a huge influence on European culture even till today, not just because of its direct influence because of what it says, but even because in opposing the church you are, if you're opposing me, that means I'm influential at some level. So in the arguments that arose in opposition to the church also basically bear the imprint of the ideas of the church. I'll clarify this a little later. तो मैंने कहा कि जो पुरानी रोमन वर्ल्ड और ग्रीक वर्ल्ड की जो लर्निंग थी वो उसको चर्च ने आगे पहुंचाया. इसमें 3 स्टेजेस हमें नजर आ रहे हैं. एक प्लेटो है, एक सिसरो है और फिर उसके बाद सेंट ऑगस्टीन. तो राइटर कहता है ऑगस्टीन फाउंड हिज वे टू एन इंटेलेक्चुअली कोजेंट क्रिश्चियनिटी बाय वे ऑफ सिसरोस फिलोसॉफिकल वर्क्स एंड नियो प्लेटोनिज्म. तो नियो प्लेटोनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वही इशराक वाला फलसफा. ये बाय द वे इस्लाम पे भी इसका बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस हुआ थ्रू इब्ने अरबी. और जो पूरी सूफी मूवमेंट है, एक नुक्ते विच गल मुक्दी है वगैरह, वो सारी बेसिकली नियो प्लेटोनिस्ट है. ठीक है, अगरचे वो प्लेटो का नाम नहीं लेते, मगर वो बेसिकली नियो प्लेटोनिस्ट मूवमेंट ही है विद इन इस्लाम. तो मिस्टिसिज्म की क्वालिटी आप कह ले ये थी कि चाहे आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, there were certain core ideas that you could accept while being a Muslim or a Christian or a Jew or something else, and those core ideas we call mysticism, and you can see their influence in many different religions. So that's kind of interesting that you think that religions are kind of just on their own, but no, that's not the way it actually works. Ideas infiltrate into different religions. It's the same ideas, but in 2 different religions. That's very interesting. तो अगर आप गौर करें तो प्लेटो ने जो आइडिया दिया था वो ये था कि ये जो मादी दुनिया है ये तो बड़ी डिसेप्टिव है. हम जब अपने सेंसेस से इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सेंसेस अक्सर जो है ना हमें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं. और इनफैक्ट हमें सेंसेस से दुनिया को नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपनी नुक्त की ताकत यानी अपनी रैशनैलिटी के साथ, अपनी रीजन के साथ चीज़ों को ग्रास्प करना. जब रीजन के साथ आप चीज़ों को ग्रास्प करेंगे, सेंसेस से नहीं ग्रास्प करेंगे, तब आप समझेंगे कि उनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है. और जब आप उनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म समझेंगे तब आप वाकई समझेंगे कि वो चीज़ है क्या. ये उसकी आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब ये था
कि ये जो मादी दुनिया है ये एक किस्म की इल्यूजन है। और प्लेटो ने इसको एक बड़ी फेमस एक बड़े फेमस मुहावरे में पेश किया, विच इज कॉल्ड द एलेगोरी ऑफ द केव। उसमें ये होता है कि वो कहता है कि इमेजिन करो कि हम सब गार में बैठे हुए और गार के अंदर आपके हाथ बांधे हुए हैं और आप दीवार की तरफ देख रहे हैं, और आपके पीछे जो है ना एक आग चली हुई, और आग के सामने कोई बंदा जो है ना वो यूं 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 करके पपेट्स बना रहा है, यूं करके, और आप सिर्फ पपेट्स को देख रहे हैं यूं करके। ठीक है, आप जो है ना नहीं देख सकते कि पीछे पपेट मास्टर कौन है, ये तो सिर्फ एक शैडो है, ये क्या है। तो ये जो शैडो है ना जो आपको नजर आ रहा है, ये वो मटीरियल वर्ल्ड है जो आपको नजर आ रहा है। ये जो चीज मुझे नजर आ रही है ना, ये दर हकीकत एक शैडो है, और जो असली चीज है वो तो मेरे पीछे है, मुझे पता नहीं क्या है। फिर वो ये कहता है कि जब वो बंदे को एहसास होता है कि नहीं यार ये कोई चीज ठीक नहीं है, वो अपनी इंटेलेक्चुअल चेन्स को तोड़ता है और बाहर निकलता है, और वो फिर गार से बाहर निकलता है। जब वो गार से बाहर निकलता है तो सूरज की रोशनी में उसको दुनिया पहली दफा नजर आती है, रंग बिरंगी और खूबसूरत, और उसको एहसास होता है कि दुनिया असल में कितनी खूबसूरत है। यानी कि अचीव्स द विजडम एंड द लाइट ऑफ विजडम एक्सेट्रा। ये इतना पावरफुल मेटाफर रहा है पूरी इंसान की इंटेलेक्चुअल तारीख में ही, ऑलमोस्ट आप कह लें कि अक्सर हम उस सारी बात को एनलाइटनमेंट और ये वो वगैरह के साथ जोड़ते हैं, टू सी द लाइट एक बहुत बड़ा मुहावरा एक्सेट्रा। तो ये सारा एक तरह से मुहावरा जो है प्लेटो के उस ख्याल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि प्लेटो एक ड्यूलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो मादी दुनिया सिर्फ ये नहीं है, एक और भी दुनिया है जो तस्वरात और फॉर्म्स की, और वो असल है, वो असल सच्चाई है, वो असल ट्रूथ जो है वो उस दुनिया में है, और ये सारा कुछ इल्यूजन है। इसी तस्वर को मोर और लेस सिसरो भी टेक अप करता है व्हेन स्किपियो द यंगर goes in his dream and meets Scipio the elder, और Scipio the elder उसको एडवाइस करता है, और उससे डायलॉग के अंदर, उसी डायलॉग के अंदर वो कहता है कि ये जो सब कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये ऐसे है और वैसे है, और असल चीजें जो हैं वो ट्रूथ और विजडम और करेज और टेम्परेंस वगैरह जो है वो उनको अचीव करना हमारा असल नोबल मिशन एंड सो ऑन। तो अगेन वेरी मच बिल्डिंग ऑन द प्लेटोनिक थीम्स सिसरो ने भी आइडिया दिया, और उसी से आप देखेंगे मिलता जुलता तस्वर सेंट ऑगस्टीन का है इन द डिफरेंशिएशन ही मेक्स बिटवीन द अर्थली सिटी, जो इस मादी दुनिया के अंदर हमें चीजें नजर आ रही, दुनिया नजर आ रही है, रियासत नजर आ रही है, एंड द सिटी ऑफ गॉड जो कि एक तस्वरात के अंदर है। दोनों चीजें तस्वरात हैं वैसे, अर्थली सिटी एज वेल एज द सिटी ऑफ गॉड आर एक्चुअली abstractions, but you can see the earthly city, the city of God is yet to be attained, etc. So you see that same dualism work itself out into from all the way from Plato into Saint Augustine. So आप ये जानते होंगे कि Christianity firstly all was a religion of poor people and oppressed people. It was a religion of the slaves even. गुलाम जो थे उन्होंने Christianity को कबूल किया, और ये रोमन एम्पायर में फैलते चले गए। तो शुरू में तो ये बड़े कमजोर लोग थे, वीक लोग थे जिनका ये रिलीजन था, और बिल्कुल शुरू में तो ऑब्वियसली दे वर ऑल बेसिकली सेमाइट्स एंड जूज, एंड लेटर क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इन द रोमन वर्ल्ड, और जो जिनको वो जेंटाइल्स कहते थे उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी कबूल करना शुरू कर दिया। तो एथनिकली डाइवर्स भी होना शुरू किया, मगर शुरू में हमेशा गरीब लोग ही इसको एक्सेप्ट करते थे। तो उनको बड़ा परसिक्यूट भी किया जाता था रोम के अंदर, उसकी अपनी एक वजह है, मगर वो जो है, मैं जब रोम गया था मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वीडियो दिखाया था आपको, तो वहां पे मैं उसमें उसी ट्रिप में मैं एक कैटाकॉम्स में गया। हम 2-3 कैटाकॉम्स में भी हमने एक्सप्लोर किया। अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं कि जो कैटाकॉम्स में आप तस्वीरें नहीं बना सकते, तो इस वजह से मैं गोप्रो पे वो सारा कैप्चर नहीं कर सका, क्योंकि दे वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि नहीं आपने तस्वीरें नहीं बनाई। मगर आप गूगल कर सकते हैं, जिन लोगों ने तस्वीरें बनाई हुई हैं उसकी आपको मिल जाएंगी, ऑफिशियली वो बना देते हैं। यार वो कैटाकॉम्स इतनी कुछ डरावनी है कि अगर आप जाएंगे ना तो उसके बाद आपके इतने जो फुल फ्लॉक ऑफ हेयर है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप गंजे वापस आ जाएंगे, इतने डरावने हैं। ठीक है, आई थिंक आई आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ माय हेयर बैक देयर। तो वो क्यों? क्योंकि वो गार हैं, और उन गारों के अंदर क्या होता था काम कि वो लोगों को बैरी करते थे। तो गारों की दीवारें हैं ना, जो दीवारों के अंदर यूं करके एक एरिया सा बना होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे वगैरह, और वहां पे वो बॉडीज को, वहां पे डेड बॉडीज को वहां पे रखा करते थे। वहां पे उनका रिचुअल होता था, वहां पे वो डेड बॉडीज को रखते। अब इमेजिन करें कि आप 2nd सेंचुरी AD के अंदर एक गार के अंदर उतर, एक दिया सा आपने पकड़ा हुआ है,
कहीं कॉकरोच है, कहीं कहीं कोई सांप घूस रहा है, कहीं रैट्स जा रहे हैं, कहीं चमगादड़ जा रहा है, और आप किसके अंदर से किसके थ्रू जा रहे हैं? इस घुप अंधेरे में, थ्रू कॉर्प्सेस. Yes, and the Christians would, that is where the Christians would meet, literally underground. So when we say it's an underground movement, that metaphor also is taken from Christianity. ठीक है ना? वो हमारे ज़माने में जब हम छोटे होते थे तो हम लाहौर के अंदर जो है ना, वो हमारे बैंड बूंड बनाने का हमें बड़ा शौक होता था. तो उस वक्त टीवी भी होता नहीं था, टीवी वाले जो हमें लिफ्ट नहीं कराते थे, ना रेडियो था ना इंटरनेट था. तो हम अपने आप को बड़े शौक से कहते थे हम अंडरग्राउंड बैंड है, अंडरग्राउंड. वो उनको पता ही नहीं अंडरग्राउंड, अब मुझे जाके पता चला कि अंडरग्राउंड का मतलब क्या है. तो वो वहां बैठ के रोम में जो है ना, ये क्रिश्चियंस जो थे वो वहां पे ऐसी अजीबोगरीब जगह में बैठ के, तो वो फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे. तो एनीवे, सो ये थी वो कैटेकूम्स वगैरह. सो मैंने ये सारा आपको मुहावरा इसलिए, ये मैंने आपको सारी बात इसलिए बताई ताकि आपको अंदाजा हो कि क्रिश्चियनिटी वाज वेरी मच एन ओप्रेस्ड मूवमेंट विद इन द लार्जर रोमन स्टेट. And it was literally an underground movement in the sense that they used to meet underground. Not that people didn't know that, Christian movement had. It wasn't underground in the political sense of the modern underground movements like band movements or something. But it was underground in the sense that it was literally under the ground. And at the same time, it was quietist and pacifist. It was initially a pacifist movement. Turn the other cheek, वगैरह आपने बात सुनी होगी. Not that I'm saying that is genuine or not genuine to the teachings of Jesus, because even in the Bible there are places where the Bible says, where Jesus is saying in the Bible, sell your cloak and buy a sword. So the jury is out on that. मगर जो Catholic interpretation है वो यही है कि turn the other cheek means कि you should never hit back, so you have to be a pacifist. यानी वो फौज में नहीं जाते थे, रोमन आर्मी वगैरह में जाना पसंद नहीं करते थे शुरू वाले डेज में. वो कहते थे हम पैसिफिस्ट हैं, हम किसी को नहीं मारेंगे, हम टोटली पीसफुल किस्म के लोग हैं. और क्वाइटिस्ट था. क्वाइटिस्ट का मतलब ये है कि वो कहते थे हम पॉलिटिक्स में नहीं मुदाखलत कर रहे, जो भी रियासत कह रही है हम उसका कहना मानेंगे, हम रियासत को चैलेंज नहीं कर रहे, हम कानून को चैलेंज नहीं कर रहे, ओवरऑल मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बातें वो चैलेंज नहीं कर रहे. सिर्फ हमारा एक ही मसला है, उनका एक ही मसला था, वो ये था कि हमारा रिलीजन मुख्तलिफ है और जो रोमन रिलीजन है, सॉरी मगर उसको हम एलिजेंस नहीं दे सकते. और ये रोमन्स के लिए बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट था. वो कहते थे जो हमारे गॉड्स को और हमारे स्टेट को एलिजेंस नहीं दे रहा, इसका मतलब है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. नाउ इट वाज ओनली ग्रेजुअली कि जब क्रिश्चियनिटी नाउ बिगन टू स्प्रेड टू द अपर क्लासेस के न्यू पॉलिटिकल क्वेश्चंस अरोज कि हाउ डिड गॉड्स लॉ रिलेट टू सिविक लॉ, व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर एंड द लॉ ऑफ पीपल वगैरह. ये सारे सवाल जो हैं उठने शुरू हुए, और इन सवालों के जवाब देने के लिए नंबर एक तो फिर कुछ सोचना पड़ा, और सिटी ऑफ गॉड was tries to answer many of these new questions that have arisen now that Christianity is becoming more and more powerful. तो सिटी ऑफ गॉड जो किताब है बड़ी दिलचस्प है, and it's considered a masterpiece of Christian political theology. Although उसका मकसद पॉलिटिक्स पे लिखना नहीं है, it is basically to defend Christianity. Accusation Christianity पे ये लगी उस वक्त, रोमन्स ने लगाई कि इनकी वजह से हमारा रोमन एम्पायर तबाह बर्बाद हो गया. क्रिश्चियंस ने हमारा रोमन एम्पायर तबाह बर्बाद कर दिया. वो कैसे? वो ऐसे कि ये लोग जो हैं वो दे डू नॉट प्रे टू आवर गॉड्स, एंड द गॉड्स नाउ हैव लेफ्ट अस, दे हैव स्टॉप्ड फेवरिंग रोम एक्सेट्रा, सो दे आर टू ब्लेम फॉर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. So now this was the City of God. His book was a response to this pagan argument, etc. Now you might think कि ये एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म की आर्गुमेंट है, इसका क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, मगर उस जमाने के अंदर obviously this was a very powerful accusation and a powerful argument, and they felt compelled to respond to it. Also in the City of God, Cicero's ideas, because Cicero is the ideal for the Roman state, उसको जवाब लिखा गया है. जो अरिस्टोटल की और पोलिबियस की जो वो क्लासिफिकेशंस थी, they are not very important to St. Augustine and the City of God. The question of stasis is not very important, because for him in the eternal scheme of things, it is of small account whether they perish this year or in a decade's time, क्योंकि असल में तो आपको enlightenment आखिरत में मिलेगी ना. तो ये जो दुनिया है ये तो आर्जी किस्म की दुनिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उस पर सेंट अगस्टीन ने को टाइम नहीं ज़ाया किया, फ्रेंकली. अच्छा, नाउ
one of the big problems that Christianity and all, sort of theologians at that time were discussing was called the problem of evil. Does anybody know what this is? Number one, you say God is all powerful. Number two, you say that God is all good. If God is all powerful and good, then why is there evil? Because if he's good and he's powerful, then he should be able to destroy evil and finish it once and for all. But evil exists in the world. So that means either he's not all powerful, he can't destroy evil, or he's not all good. मुझे माफ कीजिए अगर मैंने ये बात की, it's just for argument's sake. So what is then the solution to the problem of evil? If God is all good and omnipotent, then there should be no evil in this world. So for pagans, this was not a problem. This was not a problem because they never said God is all good. They said God can be bad. God is just powerful. And वो भी power उनकी change होती रहती है, vary करती रहती है, and so on and so forth. They're just powerful, but they're not necessarily good. You have to propitiate them. You have to make them happy. You have to make sure कि वो आपसे नाराज ना हो. और अगर वो नाराज नहीं होंगे तो आपका ख्याल रखेंगे. अगर नाराज होंगे तो आपको तबाह कर देंगे. इसमें कोई जस्टिस नहीं है. वो ये नहीं कह रहे कि वो बड़े जस्टिस वाली बात है. So for them, evil was a brute fact. They accepted it as such, unclouded by any idea that the gods might have intended there to be less of it. ये कोई मसला नहीं था उनके लिए. ठीक है? Pagan religion ascribed earthly misfortune to the malice of gods who had been insulted or slighted. Gods could be very egotistic. The Greek gods and the Roman gods could be very egotistical. आप आए और आपने सलाम नहीं लिया, मुझे तप चढ़ गई, मैंने कहा निकल जा क्लास से. मैंने कहा इसकी फैमिली तबाह कर दो. क्यों नहीं इसने मुझे जो है वो सलाम किया, या क्यों नहीं इसने मुझे जो है ना सैक्रिफाइस की, या कोई मुझे खुश करने के लिए कोई आके मेरे टेंपल में आके मुझे को खाना पीना दे, कुछ तो करे. ठीक है ना, इसने कुछ किया ही नहीं. तो इस वजह से आई कुड बी वेरी एंग्री विद हिम. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू लुक एट, राइट, टू मैनेज. अच्छा, तो अब इसके जो पॉसिबल परम्यूटेशन वाले आंसर्स हो सकते हैं वो तीन हो सकते हैं. दो तो मैंने आपको बता दिया, either God is not omnipotent or he's not benign. So you can go into three ways. पहले मैं आपको दो तरीके बताता हूं. या तो आप ये कहें कि God is not all powerful, that's why he can't stop the evil. या आप ये कहें कि God is not all good, that's why God can create bad. तो एक solution ये था by a person called Mani, who was also himself claimed to be, a religion and started this religion, Manichaeism. I think I got it right that time. I don't know. Anyway, so he introduces this idea of dualism. Now, this idea of dualism is actually very, very old. एक तो Platonic dualism है ना, मगर एक और किस्म का dualism भी है जो Zoroastrianism में है. Zoroastrian religion में जो पर्शिया का religion था, जो तकरीबन 1000 साल उनका official religion था. There is Ahura Mazda, and then there's there's a fight between the good guy and the bad guy. This is a cosmic fight going on between the forces of evil, the divine forces of evil, and the divine forces of good. And we are part of that fight in one way or another. So, this idea that there is in Christianity also and in Islam also, you have the God and you have the shaitan. But the shaitan, Iblis, is nowhere near. I mean, he's just sort of an angel that's gone wrong, right? He's not anywhere near, and he just whispers to you evil things and gives you bad ideas, like, for example, making those, knocking on people's doors, etc., and running away with food and not paying for it, etc. But he's not he cannot challenge the power and omnipotence of God at all. He's very, very low down in that particular scheme. So, but from Zoroastrianism, then you get this idea of dualism. So Mani takes up that idea. He says the material world is evil. You see the influence of Plato as well here. As is all matter evil. Ouch. Don't kick it too hard. It's all evil, and that is why in this world we live in a realm of pain and suffering. ये दुनिया ही कमबख्त मनहूस है. ठीक है, कैसी मजेदार किस्म की बात है. The God revealed in the Old Testament is good, but the physical world was not created by that good God. Good God. It's not created by God. Then who created it? It's the creation of the devil. ये जो material world है, ये is the creation of the devil. For this reason, Manichaeism held a negative view also of sexual passion. The created world is evil, as is our physical nature and sexual reproduction, or even eating meat is bad. They were all vegetarians.
Christ was, in their view, a great teacher. He emanated from God, as do all the great prophets, but was not literally the Son of God. Nor could he have suffered bodily torment on the cross. That was an illusion. By the way, in the Quran, this is exactly what the Quran also states. It's very similar, or not exactly, but very similar to what the Quran states. That Christ did not suffer on the cross, and that, of course, God does not have a son or cannot have a son. He is neither begotten nor begets, etc. Christ was pure spirit, and the human body that observers saw was the appearance that the divine spirit wore for a temporary purpose. So his spirit was divine. The material world, your body is itself something that is not good, it's evil, right? Now, this had a very powerful attraction for St. Augustine. In fact, he first converted to Manichaeism, but this kind of sets you on a very suicidal, hostility to the material world. कोई भी मटीरियल चीज आप समझते हैं, हर मटीरियल चीज बुरी है. मजबूरी है आपको कि आपको खाना ही है, और मजबूरी है आपकी कि आपको छत चाहिए और आपको अपनी बॉडी का और अपने जिस्म का ख्याल रखना ही है. मगर ये सब चीजें जो है ना, ये असल में is the evil of this world. हमारी जो असल सोल है और स्पिरिट है, वो एक तरह से कैद है इस मादी दुनिया के अंदर, और उसकी तलब जो है वो यही है, जिस तरह एरिस्टोटल कहता था कि बस इस मादी दुनिया से, इस बदन से निकल के मैं उस तस्वराती दुनिया में पहुंच जाऊं जहां मैं खुश थी. आई डोंट नो इफ इट्स अ फीमेल सोल और अ मेल सोल, खुश था या खुश थी. So if the flesh is evil and the spirit good, then taking leave of the flesh by suicide seems to be the route to felicity, or at least to emancipation from earthly evil. मार लो फिर अपने आप को, ले जाओ अपनी सोल हेवन में. मगर सेंट ऑगस्टीन को ये बात कुछ ज़्यादा अपील नहीं की. और भी बातें थी, वो अपील नहीं की. ज़ोरास्ट्रियनिज्म का इन्फ्लुएंस, सन वर्शिप वगैरह, और शायद मे बी ही डिडंट वांट टू बी अ वेजिटेरियन, आई डोंट नो. दैट वाज अ जोक, द लास्ट पार्ट. If human beings are only transitory on earth, and earth is but a vale of tears, vale का मतलब है valley of tears, through which we must pass on our way to paradise, earthly politics loses almost all value. In fact, all things earthly lose all value. And there's also a very negative perception about sex and about attraction and so on and so forth. Just want to get away from all of those material things. अच्छा, तो ये उन्होंने रूट लिया. पहले तो सेंट ऑगस्टीन इसे, उस वक्त सेंट नहीं था, ऑगस्टीन इसे बड़ा खुश हुआ. हाँ, ये वजह है, ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया बनाई किसी डेविल ने है, इसीलिए इतनी दुख और दर्द है इस दुनिया में. दुख दर्द तो बहुत है. बाय द वे, वो जो फ्रेज है ना, वेल ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ टीयर्स, वो कार्ल मार्क्स में भी है ना, दिस वर्ल्ड इज अ वैली ऑफ टीयर्स एक्सेट्रा, बड़ा यूज होता है. अच्छा, तो पहले तो सेंट ऑगस्टीन को ये बात बड़ी अच्छी लगी. मेरे बाद में उसने कहा नहीं यार, इसमें कुछ मामला ठीक नहीं है. कुछ और भी बातें थी कि उसने सितारों सियारों के बारे में, मानी ने कुछ ऐसी बातें की थी जो कि करेक्ट नहीं थी. तो उसके बाद उसकी फेथ उसमें शेकअप हो गई, और उसने कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा हूं. और तो मैंने आपको बताया कि 2 सोल्यूशंस थे ना पहले जो मैंने आपको दिए थे प्रॉब्लम ऑफ ईवल के. एक सोल्यूशन ये था, गॉड इज नॉट ऑल पावरफुल. दूसरा सोल्यूशन ये था कि गॉड इज नॉट नेसेसरली ऑल गुड. लो जी, सेंट अगस्टीन ने अब मानिएकिज्म से एक तीसरा सोल्यूशन निकाला, वो जो आप इसको समझने की कोशिश करें. वो ये, गॉड इज ऑल गुड. सुनना, ये बड़ी मजेदार बात है. गॉड is all good, God is all powerful. Why is there evil in the world? Basically because you are evil. Yes, you are born in sin. You have sinned. The only man that had not sinned was Adam, Hazrat Adam. And then he committed the original sin. And once the original sin was committed, humanity, every child is born in sin. ओए होए होए, वो कहता है बच्चे को आप समझते हैं बड़ा इनोसेंट होता है, आप समझते हैं बड़ा इनोसेंट होता है. जब बच्चा रो रहा होता है, मैंने दूध पीना है, मैंने दूध पीना है, हाथ पैर मार रहा होता है, तो वो इतना कुछ कर नहीं सकता बच्चा, मगर वो भी वायलेंस ही कर रहा है ना एक तरह की. तो आपको अजीब सी बात लग रही. मतलब अगर उसके पास पावर होती तो वो जबरदस्ती कर लेता, मगर उसके पास पावर नहीं, इसलिए हमें बड़ा लगता है क्यूट बेबी, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी. वो क्यूट हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पावरलेस है. मगर अ चाइल्ड कैन बी वेरी वेरी डिमांडिंग.
an understanding. It is neither that God is not benign, nor that he is unable to stop evil. Rather, man is born in sin. Even a child is not innocent. Nobody is innocent. आप ऐसे मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं आपने भी किया. आपने क्यों किया? आपने अगर नहीं भी किया तो आपने किया. क्यों किया? Because we are all from Adam. And Adam has sinned, and therefore all of humanity has sinned. And by the way, that's why Christ comes to this world and is taken on the cross to atone for your sins, according to Christianity. So we are all sinners, and God might justly have condemned all of us. None of us is innocent of the sin of Adam. Even if you're innocent of other things, you're not innocent of that. So gali mukai, you are the sinners. You're the reason why there's evil in this world. We should be grateful that he has spared some when he might in justice have punished all. तो आप पूछ रही, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, वो भी जन्नत में जाते हैं, और वो उनके साथ जिंदगी में भी अच्छे होते हैं और वगैरह वगैरह, तो उनके साथ तो अच्छा ही होना चाहिए. तो सेंट अगस्टीन कहता है कि God didn't have to do good to any of you. If he did good to any of you, or if he did good to some people, it is because we should be grateful कि आपको माफ कर दिया है और आपको जो है वो अच्छे कुछ अच्छा मिल गया, जो भी his grace or whatever. Otherwise you are not deserving of it. We are filled with the vanity of earthly desire. And what is that evil? The evil is that we are vain. We are filled with earthly desire. We want glory. We want the trivialities of this life. We want the trivialities of the body. We commit sins of the flesh. We commit sins of greed, lust, gluttony. What are the other 7 deadly sins? Sloth, laziness, pride. और क्या है? इस पे फिल्में भी बड़ी बन चुकी हैं, राइट? तो ये सारी जो 7 deadly sins है, ये हम हैं, ये हमने पैदा की हैं, ये हम हैं, और ये हमारे नेचर में है. रीजन जिसके बारे में सोक्रेटिस ने कहा कि मैन ओनली डज इविल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीजन, और अगर आप रीजन अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप कभी कोई बुरी हरकत नहीं करेंगे, इविल हरकत नहीं करेंगे. रीजन के बारे में सेंट ऑगस्टीन कहता है, नो, इट ओनली असिस्ट्स अस टू चूज वन और मोर लेस सिंफुल कोर्स ओवर अनदर. रीजन सिर्फ इतनी मदद कर सकता है कि मैं इतना गुनाह करूं या मैं इतना गुनाह करूं, बस. आज मैं कौन सा गुनाह करूं, बस. रीजन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं अकॉम्प्लिश कर सकता. रीजन की तो धज्जियां उड़ा दी सेंट अगस्टीन, धज्जियां उड़ा दी. कुछ भी नहीं कर सकता रीजन. कोई आपको सच्चाई का रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई आपको ये नहीं बता सकता, राइट फ्रॉम रॉन्ग नहीं बता सकता, कोई एथिकल स्टैंडर्ड नहीं क्रिएट कर सकता. क्या चीज एथिकल स्टैंडर्ड पे क्रिएट कर सकती है? ओनली गॉड. तो evil is therefore, why is there evil? Because evil, why doesn't God finish it, as you asked? Evil is estrangement from God. When you move away from God, the further you move, the more evil you become. Grace was a Christian rendering of the Neoplatonist claim that the world is the more evil and the more unreal the further it is away it is from the one and the true. So imagine कि वो one true चीज है जिससे सारी knowledge, goodness, light की तरह emit कर रही है. इसको emanation कहते हैं. और जितना आप उस लाइट से, जिस तरह वो सूरज है, और जितना आप उस लाइट से दूर होते जाते हैं, आप मरकरी पे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वीनस भी ठीक है, ओके, अर्थ में चलो जिंदगी भी है, मार्स वगैरह, जब आप प्लूटो पे जाते हैं तब आप प्लेनेट में नहीं रहते. You didn't get that joke. एस्ट्रोनॉमी में प्लूटो पे बड़ी डिबेट हो रही है कि whether it's a planet or an asteroid, right? मगर जब आप जितना दूर जाएंगे उस सच्चाई से, तो उतना आप evil होते चले जाएंगे. So when we say to be near God is to be near goodness, he means it quite literally, not in the sense physically, but in the sense that the closer you are to God, the more that is the path to finishing evil. We sin against the light because we have a will to do evil. Fallen men can only choose between evils unless they receive divine grace. और ये भी आप गलतफहमी ना समझें कि आप जो है वो अपनी मर्जी से अच्छा कुछ चूज करते हैं. आप अपने जहन से और रीजन से, मैंने बताया, सिर्फ 2 गंदी चीजों के दरमियान चूज कर सकते, अच्छाई नहीं चूज कर सकते. जब आप अच्छाई के रास्ते पे जाते हैं तो कौन आपको लेके आता है अच्छाई के रास्ते पे? गॉड. That's called the grace of God. ठीक है? God guides you. If you haven't made your path to God, God has made a path for you to come to Him. ठीक है?
Libido, not to be mistaken with sort of necessarily a sexual term, is desire. We know that, right? But it makes the world, according to him, move. So the question is, what do you have libido of? What do you have love for? Libido is just another word for love. What do you have love for? What do you have desire for? If you have desire of the flesh, if you have desire of earthly things, glory and fame and fortune and all of these things, that is the path to evil. If your desire, however, is just to be close to God, that is what will lead you to the light. So, our problem for St. Augustine is that we suffer from a surplus motivation towards theft and violence and wickedness, and all of this stems from that original sin. We are kind of genetically programmed into sin. Because of that first sin, everybody's like that, is a sinner. For Augustine, then, the sense that the earthly city is a city of those driven by love of earthly things is pervasive. तो रोम जो है वो एक earthly city है. क्यों? क्योंकि उसकी desire क्या है? उसकी desire है to be a big empire, to be rich, to be honored, to be loved, to be feared, to be successful. All of these things are earthly desires. Good earthly cities are not in the deepest sense just, but well ordered. और अगर आप ये समझते हैं कि रोम बड़ा उसमें जस्टिस थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो जस्टिस नहीं है. इट्स जस्ट ऑर्डर. यस, इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड. इज इट जस्टिस? नो. हो सकता है कानून बड़ा सख्त हो और जो बंदा चोरी कर रहा है उसको सजा भी मिलती हो, बट विली सेंट अगस्टिन डजंट से दैट्स नेसेसरली जस्ट. इट्स जस्ट मींस इट्स अ वेल ऑर्डर्ड सिटी. बस जस्टिस क्या है? व्हेन यू आर क्लोज टू गॉड. So, the earthly city, as much as the city of God, is a conceptual rather than a geographical entity. पहली बात तो ये clear हो गई. City of God किसी specific city का नाम नहीं है. Earthly city भी किसी specific city का नाम नहीं, as such. Although he often compares it to Rome, but that's just because Rome has earthly desire. No earthly body could claim to be the city of God on earth. Augustine held Rome to be to Cicero's standards. अच्छा, अब अगस्टीन ने ये कहा चलो रोम को देखते हैं. आप बड़े फख्र करते हैं रोम पे. रोम के अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें. सिसरो आपका चैंपियन, ठीक है, आप कहते हैं सिसरो जैसा बंदा कोई से ग्रेट आदमी से उन्होंने सानू सिखाया करेज, टेम्परेंस वगैरह जो भी. आओ देखते हैं कि ये सिसरो ने स्टैंडर्ड तय किया, क्या रोम वाकई उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है जो सिसरो ने तय किया था, जिसको आप कबूल करते हैं कि ये दिस इज व्हाट अ गुड सिटी इज लाइक, दिस इज व्हाट अ गुड स्टेट इज लाइक, दिस इज व्हाट अ गुड सिटीजन इज लाइक. क्या आप उसमें पूरा उतरते हैं? फिर वो धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है इस बुनियाद. कहता है आप तो करीब भी नहीं हो स्टैंडर्ड के. बात क्या कर रहे हैं आप? नो पेगन स्टेट प्रैक्टिसेस सिसेरोनियन जस्टिस. जितने स्टेट्स हैं दुनिया में इस वक्त देख लें, कौन सा स्टेट है जिसको कह सकते हैं वाकई कि ये उस सिसरो के पूरे स्टैंडर्ड पे उतरा है? कोई भी नहीं. देयर आर गुड एंड बैड स्टेट्स, नो डाउट, बट देयर इज नो स्टेट ऑन अर्थ ever was, is now, or ever will be a true res publica in the Ciceronian sense. ये आइडियाज आप दे दें मगर रियलिटी बिल्कुल वो है ही नहीं, कुछ और ही है. So Augustine therefore attacks Rome as driven by the libido dominandi, the lust of conquest, the lust for domination. आपका जो रोम का जो libido है, desire है, वो क्या है? Just to dominate other people, just to enslave other people, just to conquer other people. That's why आपने आपकी आर्मी, आप ये वो सब को जो उसको इतना जो है ना चैंप समझते हैं, उसी चीज को आप सेलिब्रेट करते हैं. कुछ भी नहीं. इस दुनिया के लिए सारी आप काम करते हैं, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं करते. In fact, there is a central mind intelligence that is animating the world. Very Platonic here, right? And that, of course, is God. The ultimate reality is one, perfect, indivisible, unshakable, while the world in which we dwell is fragmentary and chaotic and incessantly shaken by disasters, both natural disasters and contrived by passionate and unwise humanity. You can see Plato being reflected so strongly here. कि वो जो दुनिया है, city of God, Plato का कि the realm of that transcendental, changeless ideas, वो perfect है, वो ultimate है, वो indivisible है, वो unshakable है, वो timeless है, वो eternal है. That is the truth. और ये दुनिया, ये तो उसकी एक बड़ी गंदी किस्म की कार्बन कॉपी है, जो chaotic भी है, जो टूटी हुई है, जो
जहाँ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते रहते हैं, जहाँ हम खुद अपना, हमारा नेचुरल डिजास्टर ना हो तो हम खुद अपना डिजास्टर कर लेते हैं। देखो ना, पहले अर्थ यहाँ पे फ्लड्स आए, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। जैसे ही फ्लड्स खत्म हुए, हमने एक और डिजास्टर कर लिया जो आपके सामने है कि बिजली के साथ हमने क्या किया और कीमतों के साथ हमने क्या किया। So the ultimate misfortune for humanity is separation from God, is a thought of the same kind. That is the reason this world is a vale of tears. So when you're separated from God, you're further away from God. That's the reason for all the evil in the world. So Christians did not destroy Rome, he says. हमने थोड़ी तोड़ा है, वो कह रहे हैं। मसला क्या था? मसला ये था, pagans कहते थे swearing allegiance to the emperor's cult was regarded by the civic authorities as the least demanding declaration of civic loyalty they could ask of a Roman subject. Augustine, on the other hand, both Jews and Christians, on the other hand, thought that they should not do it. This was the only religion at that time that felt this way. Because in the Old Testament, in the Bible, there is the word that I am a jealous God, says Yahweh. I am a jealous God. What does that mean? What does that phrase mean? It means that you cannot worship any other God. अच्छा, जो पुराने religions उस ज़माने के थे, जो Judaism से बड़े मुख्तलिफ थे, उसमें you could believe in one God and you could also believe in another one and a third one, etc., etc. Not that the people of that one religion believed in the other one, but you as an individual are free to believe in more than one God. But now monotheism is saying, no, there is only one God. Therefore, you cannot submit yourself to any other God. And if you cannot submit yourself to any other God, the oath of allegiance of the Roman state makes it goes completely contradictory to Jewish and Christian faith. Because the Bible clearly says you cannot hold any God before me. So, pagans argued that the refusal of the Christians to pray to the gods of Rome led to gods abandoning Rome. जो Greek gods थे, Mars and ये वो फलां फलां, उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें लिफ्ट नहीं कराते, हम भी आपको लिफ्ट नहीं कराते, देखते हैं आप कितनी देर एग्जिस्ट करते था। रोम टूट गया। वो कहते थे कि भाई इस वजह से रोम टूटा। ऑगस्टीन ने कहा कि द ओल्ड गॉड्स हैड नेवर केप्ट देयर साइड ऑफ द बार्गेन। जो मार्स वगैरह और जुपिटर और ये वो सारे पीछे आप उनके भागते फिरते थे, उन्होंने कौन सा आपको लिफ्ट कराई है या उन्होंने कौन सा अपने एंड ऑफ द बार्गेन पूरा किया आपको प्रोटेक्ट करना। दे हैड नेवर प्रोटेक्टेड एनी स्टेट। भैया ये तो लोगों की लड़ाई थी, जो ताकतवर था वो ले गया, इसका गॉड वुड से कोई ताल्लुक ही नहीं था आपके मार्स से और जुपिटर से और बाकी सबसे या वीनस से। Yes, they're named after the planet, so the planets are named after them, etc. He pointed out that good and bad fortune falls upon the just and the unjust alike. अच्छे लोग होते हैं वो भी अर्थक्वेक में तबाह हो जाते हैं, बुरे लोग जो हैं वो भी अर्थक्वेक में तबाह हो जाते हैं। इसका खुदा से कोई ताल्लुक ही नहीं, किसी भी आपके रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। इसका बस this is what happens in the earth. Earthly success and failure have entirely earthly causes, he says. Rome तबाह हुआ है तो it's only because of earthly causes, not because we stopped saying, because we stopped taking pledge to the state and to to your religion and so on and so forth. उससे इसका कोई ताल्लुक। Not an incorrect argument in my view. I think that's a correct argument. So anyway, अब कुछ Christian heresies भी शुरू हो गई. There was Donatus the Great, who and this cult or this group or these Christians convinced themselves that they were the only Christian church in all the world and entitled to convert dissenters by force. Then, of course, force had to be used against them. Then there was circumcilians who forced Augustine to develop the idea that what matters is the sacrament being administered and not the moral purity of the minister. वो ये कहते थे कि जी फलाने मिनिस्टर ने ये किया, फलाने मिनिस्टर ने वो किया, फलाने मिनिस्टर ने ये किया, ये भी सिनर है, ये भी सिनर है, इसने ये डिजायर किया, इसका वो डिजायर था, इसने ये किया वगैरह, जो भी उनकी करप्शन, उनकी बुरी हरकतें वो एक्सपोज करते थे। सेंट अगस्टिन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भाई वो तुम्हें सैक्रामेंट दे रहे हैं ना, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज द सैक्रामेंट। डजंट मैटर कि वो जो देने वाला है वो हो सकता है वो भी सिन में हो, तुम भी सिन में हो, फर्क तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। So the moral purity of the minister is not important. This became a very important doctrine, by the way, because इसकी political implications भी हैं, that we should not inquire into the character of political leaders, but look to their impact on the lives of their subjects. So it doesn't matter कि अच्छा यार पर्सनल लाइफ में वो बड़ा खराब था, ये था वो था मिनिस्टर जो था, मगर उसने अपनी ड्यूटी पूरी की टू द चर्च, ठीक है, जो उसने करना था काम उसने पूरा किया। इसी तरह हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर हो, पर्सनल लाइफ में उसने कुछ बुरी हरकतें भी की हों, मगर जो उसकी ड्यूटी थी एज प्राइम मिनिस्टर वो उसने पूरी की। तो व्हाट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट?
तो फॉर सेंट अगस्टिन ही सेड वो ड्यूटी अगर पूरी कर रहा है टू द चर्च तो फिर वो ठीक है। उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये है कि अगर ड्यूटी पूरी कर रहा है टू द स्टेट तो वो ठीक है, डजंट मैटर कि पर्सनल लाइफ में वो गलत कर रहा तो वो खुदा के सामने जवाबदेह होगा। फिर द स्टेट फॉर अगस्टिन फर्स्टली was could be like a band of robbers, a band of big robbers. It wasn't necessarily like for जैसे Aristotle के लिए the state is the ultimate, nature of man and उसके बगैर हम जानवर बन जाएंगे और उसके बगैर हम पता नहीं क्या हो जाएंगे और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते वगैरह। वो ऐसा कोई आइडिया नहीं उसके बारे स्टेट के बारे में। No society can give a man his due if it takes him away from the worship of the one true God. That is the most important criteria by which to judge these things. So state is just here for earthly things. उसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको कोई बेहतर इंसान बना दे, उसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको एथिक्स सिखा दे, उसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको जन्नत में पहुंचा दे। None of these things matter. That only God can do. And it is God that does it, not you. Augustine accepts the Pauline claim that the powers that be are ordained by God and that disobedience, save under the conditions spelled out earlier, is an affront to God. तो इसका मतलब है कि आपने स्टेट के खिलाफ डिसोबीडियंस नहीं करनी, जो कानून है उसको ओबे करना है, अनलेस ऑफ कोर्स एक केस हो सकता है और वो ये है कि इफ द स्टेट फोर्सेस यू टू डू समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट योर फंडामेंटल कोर बिलीफ ऑफ मोनोथेइज्म. Although he does not argue that kings are the Lord's anointed, that their right to govern is personal, but that the Christians must obey the law. The individual must leave politics to the powers that be. तो ये वही क्वाइटिज्म जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि हम कोई रियासत पे कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे और हम रियासत बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हम तो वी आर ट्राइंग टू गेट क्लोज टू गॉड. तो लॉक को अगर आप देखें, जब आप बाद में पढ़ेंगे, तो वो तो कहता है कि अथॉरिटी जब इस्टेब्लिश होती है तो आपके पास एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपके पास एक राइट है कि अगर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो आप उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं. इसी तरह आप देखें कि इवन सिस्टरों के लिए भी टायरेंट्स जो कि क्रिमिनल्स हैं कैन बी किल्ड. और आपको पता है वो जो ग्रैकस ब्रदर्स थे उसको जब असैसिनेट किया और जूलियस सीजर को असैसिनेट किया तो सिस्टरों ने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया. तो हॉब्स भी ये कहता है कि फाइनली, वैसे तो आपसे सारे हकूक ले लेता मगर फाइनली ये कहता है कि चलो अगर सेल्फ डिफेंस में आपको लड़ना पड़े तो ये जायज, सेल्फ डिफेंस में मैं आपका राइट आपको देता हूं. मगर सेंट अगस्टिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट लीव्स अ वेरी ब्लीक पिक्चर इन द सेंस that you are compelled to obey the laws of the state, because ultimately the laws of the state are just there to order society. They have nothing whatsoever to do with achieving grace. But it is also the duty of the church to point out to the people, the lay people, as well as to the rulers when they are doing something bad. So just as cowardly bishops can administer the sacraments, and we are not to inquire into their character but accept the sacraments at their hands, earthly rulers must be obeyed because they are rulers and not because they are good men. So it doesn't matter what their character is. The law is the law and you have to obey it. You can't say कि उसका वो बद किरदार रूलर है इसलिए मैं कानून तोड़ रहा हूं. You can't do that according to him. और इस वक्त तक वैसे फौज के अंदर भी क्रिश्चियंस जो हैं वो रिक्रूट हो रहे थे, रोम की फौज के अंदर भी, और जो आइडिया था दैट द क्रिश्चियन शुड बी पैसिफिस्ट वो खत्म हो रहा था. हाउएवर नाउ चर्च का जो टास्क है वो ये है टू वार्न रूलर्स एज वेल एज देयर सब्जेक्ट्स व्हेन दे वर एक्टिंग इमोरली. चर्च ने आपको बताना है व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग. नॉट टू डू सो वाज टू कमिट एन इनजस्टिस टुवर्ड्स देम सिंस एडमोनिशन वाज देयर ड्यू. यानी चर्च ने आपको बताना है ये सही है ये गलत है, फिर आपने उसको ठीक करना है, खुद ठीक करना है आपने. ठीक है ना. चर्च का वो काम नहीं जो स्टेट का काम है. स्टेट का काम है टू बिल्ड अ वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, आपकी अर्थली चीजों का ख्याल रखना. चर्च का काम है आपको बताना है गुड और बैड क्या है और आपने उस दायरे के अंदर रह के काम. Augustine then takes it for granted that it is a good thing if an earthly ruler is imbued with the true faith and is willing to bring his people to that faith. कि अगर अच्छा क्रिश्चियन होगा तो वही अच्छा रूलर बनेगा भाई, क्योंकि he will know what is right from wrong, right? अब लुक्रीशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसमें लुक्रीशिया is raped. She's a Roman noblewoman, she's raped and she feels dishonored and she takes her life. And she was celebrated as a great hero because, she took her life after being dishonored. So Saint Augustine कहता है this is totally wrong. In fact, Lucretia is not dishonored by the rape and it was wrong of her to kill herself. Suicide in such a situation, and suicide in all situations, he says, is like murder. She murdered herself. And is to be deplored.
The fact is that if Lucretia was raped, the fact is that her soul cannot be impacted in any way by any injury to her body. An injury to your body is not the same thing as an injury to your soul. An injury to your soul is not necessarily the same as an injury to your body. So you could injure your soul and yet your body could be very strong. You could be very healthy. But you are a corrupt man. You're a bad person. You've injured your soul in that sense. And vice versa, an injury to the body is not necessarily an injury to your soul. Christ, for example, on the cross, when he's tortured and when he's put on the crucified, when he's crucified, his soul remains absolutely pure without any injury, according to Christian belief. It's just his body that is being, hurt and, crucified. Punishment. It's difficult to talk about it. It's like such a horrific thing. Punishment. Now he holds very interesting views about punishment as well. He says, firstly, that corporal and capital punishments were widespread in his day. लोगों को मारना, टॉर्चर करना, ये आम बात थी. और उस जमाने के अंदर अगर किसी पे एक्यूजेशन लगती थी कि इसने चोरी की है, तो उसको पकड़ के छितर मारते थे जब तक वो ये नहीं कहते थे कि हाँ मैंने चोरी की. छितर मारती है कि वो ये भी कन्फेस करवा लेती है to crimes that you have not committed. So Rome was, pretty much the same back in the day. The only people who could escape from it were the citizens. If you were not a citizen of Rome, you could be tortured for confessions or even for information, etc. Augustine writes that not that Augustine is particularly squeamish about physical, sort of violence, etc. He's not, but he feels that this is completely wrong. And for the reasons that he describes, he says that we can frighten people into behaving as we wish, but we cannot frighten them into an unforced belief in what we wish. आप उनको डरा तो सकते हैं, मगर किसी को डरा के आप जो काम करवा रहे हैं वो दिल से तो नहीं कर रहा. So he is not moved any closer to the actual, position that you might want to bring him to. Innocent लोग भी torture हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है. और actually Augustine चाहता ही है कि the purpose of punishment ought to be that the person repents and regrets what they did and comes to the light, realizes their mistake. In other words, the purpose of punishment is not to कि मेरे साथ ज्यादती हुई तो उसके साथ भी उतनी ही ज्यादती हो. The purpose of punishment is not आपके साथ या आपके साथ आपकी जो चीज चोरी हुई है वो अब आपको वापस, चोरी तो खैर एक और एग्जांपल में, अगर आपको जो इंजरी हुई है वो वापस ठीक तो नहीं हो सकती ना, वो तो खुद हील हो गई तो हो गई, but it cannot be fixed. So the injury that we do to the other that did the injury to you, per se, let's say, the purpose of that is not that your injury will be fixed, but the purpose of that is that that person will repent and regret and realize that what they did was wrong. So the purpose of punishment is education of that individual, the moral education of that individual. So punishment was an educative process. For this reason, he also thought that the death penalty was a bad thing, and he was very hostile to the death penalty very early on. He felt कि death penalty में तो वो repent ही नहीं करेगा, वो regret ही नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं कि हाँ यार मुझसे गलती हुई और मैंने जो किया वो बड़ा बुरा था और वगैरह वगैरह. तो it's not educative in any way, shape or form. It serves no purpose. With respect to just war, he says a just war is motivated by the intention to give to each what is his due. In this case, the punishment due to an aggressor. So even a just war can be कि अगर एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ ज्यादती कर रहा है तो तीसरा स्टेट, या एक स्टेट अपने लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है या एक स्टेट किसी और के साथ ज्यादती कर रहा है, तो दूसरा स्टेट उस पर जंग इस मकसद से भी कर सकता है कि वो पनिश हो और उसको अपने मिस्टेक का एहसास हो. तो इन अदर वर्ड्स वॉर कैन, सेल्फ डिफेंस में तो वॉर कर ही सकते हैं आप, वो तो जस्ट वॉर है, वो तो सारे मानते हैं, मगर आप वॉर इस केस में भी, इस इंस्टेंस में भी कर सकते हैं एज पनिशमेंट टू अ स्टेट दैट इज रॉन्ग्ड citizens or other people. So that was his concept of just war. Now you notice that a big gulf has opened up between Cicero and the values that were dominant in the Roman period and Saint Augustine and the values that come to be dominant now in the medieval period. क्या फर्क है? Cicero's writings are replete
with praise for tyrannicides, for example. बादशाह मार दो, ये कर दो, अच्छा किया, जूलियस सीजर को मार दिया, बहुत अच्छा किया, ग्रैकस पदस को मार दिया, बिल्कुल ठीक किया, करने की जरूरत थी, टायरेंट्स को मार देना चाहिए, वगैरह वगैरह। और ऑगस्टीन बिल्कुल उसके ऑपोजिट खड़ा है, वो क्वाइटिज्म पे खड़ा है कि हम तो सियासत कर ही नहीं रहे, हमें तो परवाह ही नहीं सियासत में क्या हो रहा है, जो कानून है हमने तो उसको ओबे करना है, वहां सिवाय उस कानून के दैट मेक्स अस डिनाई द यूनिटी ऑफ गॉड। असाइड फ्रॉम दैट बाकी सारे जो असली कानून है हमको ओबे करेंगे, हमारे तो कोई सियासी मकासद ही नहीं है। Cicero's thinking is this worldly. वो कह रहा है हाँ, हमने अगर आप अपनी रियासत को ताकतवर बनाना चाहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अच्छे सिटीजन बनना चाहते हैं, तो ये करना होगा। इट्स दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर कुछ अचीव करना है तो ये करना। ऑगस्टीन इज अदर वर्ल्ड, ये दुनिया तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये तो इधर तो हम चंद दिन के मेहमान हैं, और इधर तो बस थोड़ा सा अच्छा रहने की कोशिश करो और बहुत ज्यादा इवल ना करो और अल्लाह के करीब पहुंचने की कोशिश करो, ये तो आर्जी किस्म की दुनिया, असल दुनिया तो बाद में है। तो लिहाजा इसमें जो सियासत और जो कुछ तुम अचीव कर रहे हो वो कुछ भी, वो मायने नहीं कोई रखता। आप समझ रहे हो मैंने नोबेल प्राइज ले लिया, जस्ट योर प्राइड टॉकिंग, इट्स ओके, इट्स गुड, बट इट्स नॉट बीइंग क्लोजर टू गॉड। ये दुनियावी चीजें अहम नहीं है। हम भी बाय द वे इस्लाम में भी बहुत ये बात करते हैं ना कि ये तो दुनियावी चीजें कोई अहमियत ही नहीं रखती, हमने तो खुदा के करीब पहुंचना है। So this is exactly the same. Augustine thinks that earthly states are the playgrounds of violent and self-deluded men, and earthly glory is nothing but vanity. तो ये उसको किसी खाते में नहीं लिखता, बड़ा स्टेट बनाया 1000 साल चले ਤੁਹਾਡਾ स्टेट, ਸਾਨੂੰ की कोई फर्क नहीं पड़ता साਡਾ, we are not impressed baby, thank you very much, he say. For Cicero, politics is the ultimate noble profession, to serve Rome. वो याद है वो क्या उसने कहा था कि वो जो बंदा आया था जो कह रहा था, कार्थेज कह रहा है कि जी मेरे साथ ट्रेड कर लो वगैरह वगैरह, और मैं भी कहता हूँ कार्थेज पे जंग की जाए, और वापस चला जाता है, उसको बैरल में डाल के दे रोल हिम डाउन द हिल विद स्पाइक्स इन द बैरल एंड ही डाइज अ हॉरिबल डेथ, एंड ही सेज क्या इसमें बड़ी बात है, दिस इज द ग्लोरी ऑफ रोम, ये तो करना ही था, राइट, दैट्स सिसेरो। तो फॉर ऑगस्टीन ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिक्स is a limited good for the fallen man who is driven by lust of earthly things. The material world has a complete disunity of mind and body. यहाँ पे completely mind और body एक दूसरे के साथ कोई उनका clear connection भी नहीं है। Body कोई चीज चाह रही है, mind कुछ और चीज चाह रहा है वगैरह वगैरह। उसका भी एक पूरा पैसेज है जो मैं रिपीट नहीं करूंगा। It's a very क्या कहना चाहिए 18 rated, तो मगर आप पढ़ सकते हैं खुद से कि the body doesn't obey the mind, he's saying, for women as well as for men, and he's talking sexually, I'll say that much, doesn't obey the mind, and this disunity of the mind and body is a product of this really kind of weird, horrible material world that we live in, which thankfully is temporary, and then we will go to our creator, and then we will have, we will be at peace. All of these contradictions will resolve themselves. अगस्टीन ये कहता है इतने बड़े बड़े आपने एम्पायर्स बनाए, क्या बेकार टाइम जाया, इससे बेहतर था if human beings had been rational, they would have created not empires but an enormous number of very small states. छोटे छोटे स्टेट्स बनाते, कम्युनिस्ट किस्म के, कम्युनल किस्म के स्टेट्स होते, multitude of tiny harmless polities could have lived at peace amongst themselves and therefore at peace internally, just as a city contains innumerable households, none of which seeks to dominate the other, and all of which may be domestically at peace. Obviously, he didn't know कि Greek city states इसी तरह के थे, और तोबा वो तो लड़ के पागल हो गए थे एक दूसरे के साथ। छोटे छोटे स्टेट्स ही थे मगर आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। मगर बहरहाल that was his ideal, the ideal of small states that were living these sort of communal lives of peace and nobody was dominating each other. That idea, notice how strong that is in the anarchist movement. It continues. You'll even see it echoed in Rousseau and many other places in Western thought. आखिर में ये, does Saint Augustine leave, quote, a dangerous legacy? I put a question mark there, although the author seems to think so, but I deliberately put a question mark. Why? Because Augustine also writes, he took it for granted that being coerced into receiving the truth was a benefit, not a burden. अगर आपको जबरदस्ती भी बिठा के सिखाया गया कि क्रिश्चियनिटी क्या है तो कुछ नहीं होता। अगर आपको जबरदस्ती भी बैठ के सिखाया गया है कि आप अभी ब्रेक नहीं ले सकते, और मैंने आपको आफ्टर ऑल बात तो अच्छी पढ़ाई है ना, और वो आपको ग्रेड वगैरह की वजह से आपको जबरदस्ती यहाँ बैठना पड़ा है, तो कुछ नहीं होता, कुछ सीखते के तो गए हो ना। तो इसी तरह अगस्टीन भी यही कहता था कि चलो जबरदस्ती आपको पढ़ा दी क्रिश्चियनिटी जो भी है, मगर जो चीज आपने पढ़ी वो तो अच्छी थी ना, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? He never contemplated the suggestion that religion was in any way off limits to state control. State जो है वो ठीक कर रहा है
कि वो जो पेगनिज्म को बैन किया, ठीक है, स्टेट अच्छा कर रहा है कि जो चर्चेज वगैरह बना रहा है और कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सच ही है। अगर सच ये है तो इसके फैलाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जनाब? दिस इज अ रियली गुड फ्रेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको डाला ताकि आपको आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब मिले। What accounts then for the fact that despite having these kind of interesting contradictions that you can't resolve and unanswered questions that you can't finish, still Augustine has such a massive footprint and influence on 1,000 years of the development of a civilization through the church, through Christianity. इतना बड़ा influence कैसे है? तो ऑथर लिखता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये फ्रेज, कहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स, ये मेरा फ्रेज है, बट वो आगे लिखता है, डज नॉट डिपेंड ऑन देयर कंस्टिट्यूएंसी नॉर ऑन देयर लॉजिकल कंसिस्टेंसी, बट, एंड आई कोट फ्रॉम एलन रायन, देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड अ लाइटनिंग रॉड फॉर पावरफुल इमोशन। ये उसने जो ना बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो किसी पीरियड के अंदर कोई आइडिया स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है, हम उसको एक एरिस्टोटेलियन लॉजिक में डाल के प्रेमिस ये है तो कंक्लूजन वो है तो इसमें ये एरर है निकाल रहे होते हैं, मगर हम ये नहीं समझ रहे होते कि चाहे वो आपको थोड़ा सा लॉजिकली इनकंसिस्टेंट भी लगे, मगर क्यों लोगों ने, क्यों पब्लिक ने, क्यों हिस्ट्री में मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको अपनाया, उसके पीछे वजह यह है कि वो किसी ना किसी ऐसे इमोशन को टच कर रहा है, हिट कर रहा है, नर्व को हिट कर रहा है, जो आप कह लें सेंसिटिव है, रॉ है, जो कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यू है सोसाइटी की, उसको एड्रेस कर रहा है। इस वजह से वो ताकतवर है। इसलिए मैं समझता हूं कि गिवन तो ऑगस्टीन्स sort of legacy also perhaps is that he may or may not have managed to solve all the problems that bothered 5th century AD Romans and North Africans and Christians, etc. But he touched upon them in a manner that certainly raised people's emotions to accept those ideas, because at some fundamental level, they did feel some sense of order, of predictability, of understanding, of comfort in those ideas. That's why I think people were open to those ideas at that particular point in time in history. Now, when the revolt against the church begins to occur, as is written over here, जो कि basically 16th, 17th centuries के अंदर बड़ी लंबी जंग होती है, 100 साल जंगें चल रही होती हैं यूरोप के अंदर, प्रोटेस्टेंट्स और क्रिश्चियन और कैथोलिक्स की, फिर कैथोलिक्स और कैथोलिक्स की, फिर प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की, वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी जंग चलती, बड़ा बंदा मरता है। तो तकरीबन 100 साल जंग चल रही होती, कॉल्ड द रिलीजियस वॉर्स। उसके बाद यूरोप थक जाता, कहता अब इस पर जंग नहीं करनी हमने, और उसके बाद हम देखते हैं यूरोप जो है ना वो सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और चर्च का इन्फ्लुएंस कम होता हुआ नजर आता है। अब दिलचस्प बात यह है दैट फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन the idea that has dominated for 1,000 years has been the idea, if you talk about, let's say, relations between men and women. For 1,000 years, the idea has dominated that any desire of the flesh is sinful. This is the hegemonic idea of the medieval period, at least as far as the church is concerned. So can you imagine that when the wave comes against this idea, against the idea that desire is a bad thing, then it comes like a flood and breaks through and goes all the way to the other side, to the side which basically says that, which is the celebration of desire. You understand what I'm saying? It's like a rubber band that's been stretched so far one way that it has to go the other way at some point. If for a millennium you've been saying that to desire a man or to desire a woman is you're committing a sin just by thinking it. So the kind of repression that you create in that society, when that breaks, it's going to go in the complete opposite direction, into the celebration and
how should I put it, the romanticization of desire itself as the ultimate goal. So we see a lot of that even today. You're not going to achieve a balance after that. You're going to go into overdrive on that particular question, let's say. And on other things as well, similarly. So in that sense, I would say that the, what is called the sexual revolution, where specifically women's desire becomes a very central idea that animates Western societies, the destruction of the libido as being centrally a repressive instrument. When Freud, for example, challenges that idea, and although Freud is insane, he makes statements that today when I read, I'm like, yaar, pagal ho gaya tu. Are you on cocaine? Which incidentally, he was. Yes, he used to take cocaine. And he even writes about it. He's like, this is pretty good. This could solve depression. So he writes some wacky stuff. But the fact is that when he begins to celebrate desire as a positive emotion, you can see that he opens like this floodgate of repressed emotions or repressed ideas or repressed consciousness almost. So in that sense, when I said in the beginning that Saint Augustine has a huge influence, Augustine has a huge influence on European civilization, not only in the medieval period, but even in the period today. What I'm trying to say is that in a certain sense, the entire feminist movement is arguing the opposite side of this case, that it was Eve and Eve's, the original sin that resulted in man being born in sin, all of humanity being born in sin, that all desire for all earthly things is sin. Desire for wealth is sin. Desire for fame is sin. Desire for another person is sin. So you can see that all of that is now being toppled. And for the last couple of 100 years, this debate has been going on. The Protestants were like saying to be rich. For example, they were saying to be rich is to be close to God. Now the Catholics तो कानों को हाथ लगा रहे थे जब Protestants ये कह रहे थे to be rich is close to God, because Saint Augustine को आपने देख लिया, वो तो बिल्कुल उलट कह रहा है. To desire riches is bad thing. It's a bad thing. फिर celibacy को खत्म कर दो, उन्होंने हाथों को कानों का हाथ लगा लिया, हाथों को कहाँ लगा लिए, either way. ये क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ा sinful चीज है. To desire to be an individual with a big name and a big to be an individualist and to desire to be popular, famous or successful is a good thing. Again, they were saying this is contrary to the humility of mankind. So you see, therefore, that even in the negation of Saint Augustine, he continues to influence through negation, the discourse in Western civilization, even arguably till today. That's why it's important to understand him, not necessarily because he's right, not necessarily on certain things. I think he's quite right, by the way, not on everything, but on some things I think he's quite right. Like, for example, when he says Rome wasn't destroyed by the Christians, these earthly things happened because of earthly reasons. Absolutely, man. Everybody can accept that. There are other things he's saying, like the rape victim is not to be blamed, or she's not the one that's lost honor. I think that's a very modern idea. Even today, we accept that idea. So there are certain things on which he's quite brilliant, in fact. But the overall framework is something that we don't necessarily accept today. But even in the rejection of it, you see that the argument always is against this idea that all of these things are sinful. And now you see that there is so much literature, films, movies, other things that are being produced and have been produced. English literature, agar aapne padha hai, so a lot of that is about desire. A lot of that is about saying that desire is not a bad thing. So now you see where that particular debate comes from culturally for Western civilization. Thank you.